Hi. So I found this kimchi. Sorry, I mean napa cabbage. Or I thought let's make kimchi. But obviously, it's not going to be an authentic Korean kimchi because I don't know how to make that. I do know how to make that, but I don't have all the ingredients. So we're just going to make some sort of a cabbage pickle. देखते हैं वैसे मैंने पहले बनाया हुआ है तो उस हिसाब से देखूंगी but look at her she is so pretty very fresh and healthy. Now we need to wash it at least 3 to 4 times. Now we're going to heavily salt it, massage it properly. Let this sit for at least 30 minutes तो उससे ये अपना पानी छोड़ देगा. Now we're making the rice flour paste. ये पेस्ट बनाना ज़रूरी है, इसी के थ्रू मसाले इसमें हम डालते हैं और वो किमची पे चिपकता है बेसिकली. दिस इज़ लाइक अ ग्लू. इसे बेसिकली तब तक पकाना है जब तक ये थिक पेस्ट ना बन जाए. जब तक ये रिड्यूस होता है तब तक ये अपना चटनी बना लेते हैं. दिस इज घोस्ट पेपर, राजा चिल्ली. ऑप्शनल है, डालने की जरूरत नहीं है. अबाउट हाफ कप ऑफ वाटर, सॉल्ट. Cook till one whistle. This is the consistency you're looking for. Ta-da! Chili powder, soy sauce, fish sauce. इसका बहुत फिशी और मेरे को बहुत पसंद आया, पता है. The chili paste is ready. It's a little hot to work with it right now. I'll just let it sit for like 30 minutes. Another food prep that I personally want to do is make some तड़का. जब भी मैं कुछ करी बनाने की सोचती हूँ, आई लव करी, ठीक है, तो जब भी मैं बनाने का सोचती हूँ उसको मैं सोचती हूँ तड़का बनाना पड़ेगा तो इट पेन्स. My head hurts. इसके ऐसे तड़का बना के रख दूंगी और ये अबाउट 3 सब्जियों का तड़का होगा तो 4-5 दिन तक चल जाएगा वो किचन में. मेरे घर तो उसको 2 हफ्ते चलाने. मर थोड़ी जाऊंगी मैं. ये है प्याज और ये है टमाटर. अप्रॉक्स 7 प्याज एंड 7 टमाटर. Yes, you can use fresh ginger garlic paste, but I like to use shortcuts. This is chicken masala, धनिया मसाला, गरम मसाला, थोड़ा सा हल्दी पाउडर. मैं नमक डालना भूल गई. टमाटोस फाइनली. हो गया है ठंडा. अब इसको डाल देते हैं इसके अंदर. Smells funky. tada! ये हो गया हमारा किमची रेडी. मैं इसमें डालने वाली थी पर अगर इसमें डालते तो फिर इसमें से बहुत बड़ा स्मेल आती है जो इसकी इसमें काफ़ी देर तक रह जाती है, तो उसकी वजह से मैं डिस्पोजल कंटेनर्स लेके आई हूँ. And yes, one more tip, do not fill it to the top. Leave some space because it's going to bubble and everything. इतना स्पेस रखना ठीक है. Almost half an inch is fine. वेजिटेबल जो हमने प्रेशर कुकर में डाले थे, these are done. अब इसको बस इसके अंदर फ्राम फ्राम करना और हो जाएगा. This is the chutney.
And this is the tadka. Everything is finally completed. I'm so tired. Kindly type kimchi if you made it till the end of the video. Thank you so much for watching. I'll meet you again in my next vlog. And yes, I'll be using all these ingredients for the next days to come.